Number 5 from exercise 1.1 of ML Agarwal, and we need to insert 3 rational numbers between 4 and 4.5. We need to insert 3 rational numbers between 4 and 4.5. So very clearly 4 and 4.5, if we think of, I can think of infinite numbers between them, but I have to follow the method, and method says that if we have to insert 3 numbers, then we have to multiply and divide by 4. That is, to insert 3 rational numbers, you need to multiply 3 plus 1. You multiply with 3 plus 1. जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं, प्लस 1 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर लेते हो. So that means to insert 3 rational numbers, you multiply this 4 with 4 upon 4 and this 4.5 by 4 upon 4. Moreover, you can write this 4.5 as 9 upon 2 to remove decimal. Anna, can you understand this? How can I write 4.5 as 9 upon 2? 9 upon 2 is 4.5. Yes, sir. Yes, sir. So this becomes 4 for the 16 upon 4, and this becomes, see, 2 1s are 2 2s are 9 2s are 18 upon 4. So you can see 16 upon 4 and 18 upon 4. It becomes 16 upon 4 and 18 upon 4. You can have only one rational number between, that is only 17. One rational number is coming in between. तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्लान फेल हो गया. तो नेक्स्ट प्लान हमारे पास क्या हो सकता है? नेक्स्ट प्लान ये हो सकता है कि आई कैन सी 4 एंड आई कैन सी 4.5, 4.1, 4.2, 4.3, all are rational numbers which can be inserted in between. So these 3 becomes the answer. या फिर इसका एक और प्लान भी हो सकता है करने का. देखो, हमने इसको वेरियस मेथड से कर रहे हैं. इसको एक मेथड हमने करा 4 और 4.5 के बीच में इंसर्ट करना है, तो 3 plus 1 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया. जब 4 upon 4 से डिवाइड किया तो 16 upon 4, और ये 9 upon 2, 4 upon 4, तो 18 upon 4 बना. अब 16 और 18 के बीच में खाली एक नंबर 17 मिल रहा था, तो एक ही मिल रहा था. अब यहाँ पर चाहते तो हम और भी सोच सकते थे. हम इसको 16.1, 16.2 ऐसे भी सोच सकते थे. तो लेकिन फिर वहाँ क्यों इतना करके क्यों सोचे? डायरेक्टली सोच लिया 4 और 4.5 के बीच में 4.1, 4.2, 4.3. या इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 4 को 4 रहने दिया और 4.5 को 9 upon 2. तो अब ये देखो 4 upon 1 और 9 upon 2 दो फ्रैक्शंस हो गए. और अब ये दोनों क्योंकि फ्रैक्शंस हो गए हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम इज 2. सो व्हाट वी डू इज ट्राई टू मेक द डिनोमिनेटर कॉमन by multiplying it in such a way that the denominator becomes same. That is, 1 और 2 का LCM is 2. That is, LCM of 1 and 2 is 2. So 1 goes into 2 times, so 2 upon 2 से multiply कर लिया. 2 goes into 1 times, so 1 into 1 से multiply कर लिया. अब ये क्या हो गया? 8 upon 2 and 9 upon 2. 9 upon 2. So now you can see there is no rational number between them. So we need to insert 3 rational numbers. So we have to multiply and divide by 3 plus 1. That is equal to 4. So it becomes 8 upon 2 into 4 upon 4. And this becomes 9 upon 2 into 4 upon 4. So this becomes 32 upon 8. And this becomes 36 upon 8. Now you can see very easily you can put in 33, 34 and 35. So 33 upon 8, 34 upon 8 and 35 upon 8 are the 3 rational numbers inserted.
These are the three irrational numbers inserted. This is how you can solve this question. If you don't want to follow this, if you don't want to follow this, this is the right official way of solving this question.